Well, good morning. Today we have a very interesting and most deadly topic in the humankind history, that is AIDS in 10 points, because we are covering this topic in 10 points today. So let us start this. AIDS. Basically, what is AIDS? AIDS, as the name is written in capital, so it has a meaning, that is acquired immunodeficiency syndrome. So this is acquired, taken from outside. Immunodeficiency means weakness in our resistance power or ability to fight against the infection. And syndrome means when the diseases are more than one, like say 4, 5, 6, 7. So when a same person is suffering from such many more diseases at a time, then definitely he is not suffering from a disease, he is suffering from a syndrome. So this AIDS is a combination of diseases. That's why it is called as acquired immunodeficiency syndrome. Okay, so why this causes syndrome, or what kind of virus, what is the etiological agent for this? See, human immunovirus, the virus which infect or disease our immune system, which lowers our immune system. That's why it is being named human immunovirus. Now once again it is being classified into retroviruses. So I have written here RT. These human immunoviruses are basically retroviruses because they consist of an enzyme, a reverse transcriptase. Now this is the solo or holo speciality of this virus, that is that this virus consists of RNA as its genome. When it infects to humans, the human cell consists of DNA as the genome. So this virus, to produce more number of same viruses, has to multiply or produce n number of its copies. It is not possible by RNA. So when it comes in our body, let us see that in mechanism, it converts its RNA into DNA to get integrated into host DNA, and to help that, this enzyme reverse transcriptase helps. So we have started the topic now. What is AIDS? Okay, it is acquired immunodeficiency syndrome, collection of diseases caused by human immunovirus. It was being firstly discovered in United States in 1981 by the scientist Luc Montagnier. Okay. Now let us see the second point, its structure. Structure is quite simply remembered by this keyword ECGRR. Now here, look at this alphabets. E stands for envelope, C stands for capsid. This envelope is a lipid membrane, and this capsid is the protein covering that covers this genome and this enzyme. Now this G stands for glycoproteins, which are the spikes present on the envelope, and this help this virus to get entry into the host cell. Now this R stands for RNA. This virus has its genome RNA. It is an RNA virus, and this R stands for this enzyme RT, that is reverse transcriptase. So in its structure, it consists of 5 ingredients. Number 1, its envelope, then its capsid, then the glycoprotein spikes, then its RNA, and its reverse transcriptase as the enzyme. Let us move to the third point, very interesting, transmission. अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, हमारे बॉडी में आता कहां से, उसके लिए एक शॉर्टकट याद रखते हैं, that is dismiss T. Okay, dismiss T. Here dis stands for drug infection spread. That means the drug injection जब हम शेयर करते हैं, so when we share this drug injection with HIV patient, we get the transmission. The mother which is infected gives birth to a child, then the child has possibility to get this transmission of HIV virus. Of course, yes stand here for unsafe sex or sex with the HIV patient, and T for blood transfusion. Directly the needles is being injected into the one person, and that blood is taken to inject into another person. So definitely this blood transfusion is also one of the transmission source for spread of this virus. Okay, which are the sources by which it is being transmitted? The drug injection sharing, infected mother to his child, sex which is unsafe or done with HIV patient, and transmission by blood transfusion. Okay, that also spread or transmit the disease. Now which category of people who are at high risk of this disease getting infected? See, those who are drug addicts, as I said, they share the needles, so they are at the high risk that any one of their group member may have the HIV. Those who are having MSP, that is multiple sexual partners, definitely they are at
high risk of this infection. Repeated blood transfusion. Now, some of people who are living in a medical condition that they need a repeated supply of blood. For example, the patients like thalassemia or anemia patient, they need a regular monthly, weekly transfer of blood, and those are at susceptible condition that they might get infected or transmitted by this infection. And the child which is born from HIV positive mother, yes, they are at the high risk of getting the infection. Now let us see what are certain myths or misconception. Okay, it's देखो किसी को कांटेक्ट करने से या उसके बॉडी फ्लूइड से या उसके साथ टाइम शेयर करने से या उसके साथ डिनर फूड लंच करने से कभी एक्सचेंज या शेयर या ट्रांसमिट नहीं होता. इट इज जस्ट अ myth that becomes a social stigma. If someone is AIDS patient, we should keep the distance. कोरोना वायरस में आपको सोशल डिस्टेंसिंग चलेगा, but HIV is not being spread by contact or fluids. So please don't follow those misconceptions. Now, one interesting point about this AIDS virus is that इसका जो incubation period है, ये depend करता है कि उस individual की immunity कितनी है. So depending upon the resistance power of that individual, this incubation period, that is the period of development of the virus inside the body of the patient until the onset of the symptoms, varies from months to years depending upon the immunological resistance of that individual. Now the most theme of this today's topic, that is mechanism. होता कैसे है जब ये वायरस बॉडी में आएगा तो हमको एड्स होगा कैसे. सिंपल है, by any of the method like drug sharing, needle sharing, या multiple sexual partner sex crime, or by having blood transfusion with infected needle, any method by which when this virus comes inside our body, see, once this virus enters the body by any of the way, it comes in macrophages. So the first residence of this HIV in our body must be remembered that it is the macrophages. So first lodging is being done in macrophages. What it does, जब वो मैक्रोफाज में आएगा, जैसे मैंने बताया, इसका तो जीनोम आरएनए है, तो इस आरएनए को ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट करेगा डीएनए में. ये ट्रांसक्रिप्शन की अपोजिट प्रोसेस है. जनरली ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, पर क्योंकि यहाँ आरएनए से डीएनए बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवर्स, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट, दैट इज डीएनए. नाउ हियर दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट्स वायरल आरएनए इनटू डीएनए. अब ये डीएनए होस्ट, दैट इज माइक्रोफाजेस, हमारे बॉडी के माइक्रोफाजेस के अंदर इंटीग्रेट होगा उसके डीएनए में, एंड देन क्या करेगा, ये नए नए वायरस प्रोड्यूस करेगा सेम काइंड के, अपने टाइप के, और वो क्या करेंगे, उस सेल को ब्रेक करके बाहर आएंगे, एंड देन दे इन्फेक्ट द टी हेल्पर सेल. हियर इज द बैकबोन, हमारी इम्यूनोडेफिशिएंसी क्यों बनती है. When the virus comes inside the body, it lodges into macrophages, it converts its RNA into DNA, integrate into macrophage DNA, और उसके बाद जब n number of viral particles produce होंगे, they infect the T helper cell, और जब T helper cell infect हो जाते हैं, then this helper cell as the backbone of cell mediated immunity, ये सारे एंटीबॉडीज को रिक्रूट करते हैं और बाहर के पैथोजन को हमेशा चेक करते रहते हैं. क्योंकि नए नए टी हेल्पर सेल्स ब्लड के अंदर इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ब्लड के अंदर टी हेल्पर सेल का और टी लिम्फोसाइट का पॉपुलेशन लो हो जाएगा. दैट इज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्शन. देयर टी सेल पॉपुलेशन डिक्रीजेस, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन्स इम्यूनिटी इज नाउ कॉम्प्रोमाइज्ड. क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, अब उसके एंटीबॉडी ज्यादा बन नहीं रहे हैं, फॉरेन पैथोजेंस को वो किल नहीं कर सकते, देन जो भी कॉमन इन्फेक्शंस आ रहे हैं उसके बॉडी में डेवलप हो रहे हैं एज ए डिसीज, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, जैसे कि कैंडिडा अल्बिकन्स से कैंडिडियासिस, या फिर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से टॉक्सोप्लाज्मोसिस. अब एक ही पेशेंट में इम्यूनिटी डिफिशिएंट हो चुकी है, कई सारे डिसीजेस डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि टी सेल काम नहीं कर रहा है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं ये वायरसेस, हर नए सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं. डेफिनेटली एट दैट टाइम that patients suffer from collection of diseases, hence this disease is called as syndrome. It is a collection of disease, although the causative agent is just one virus, HIV virus. Okay, now let us see. अब जब ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, डिटेक्ट कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे, उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट की जाती है जिसमें एंटीजन या एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस HIV को डिटेक्ट किया जाता है बाय दिस मेथड इलाइजा. इलाइजा का लॉन्ग फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड immunosorbent assay. I repeat,
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और एलाइजा करने के बाद भी कंफर्म करने के लिए ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की जाती है। वेस्टर्न ब्लॉट नॉर्दर्न ब्लॉट टेस्ट आपने देखा होगा मॉल बायो में। सो एलाइजा दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और उसको कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट ट्रीटमेंट टेस्ट की जाती है। नाउ लेट अस सी द सेकंड पॉइंट दैट इज ट्रीटमेंट। अब एक बात तो समझना है, विधि का विधान है, एड्स जिसको होगा उसे मरना है, बट कुछ ड्रग्स हैं जिससे ट्रीटमेंट क्योर तो नहीं करेगा बट लाइफ स्पैन जरूर इंक्रीज होगा। उसके लिए एक शॉर्टकट याद रखना, आजाद यल। नाउ हियर दीज आर द ड्रग्स, A for azothiamidine, Z for zidovudine, A for abacavir, D for diadenosine, or L for limivudine. Okay, so these are the drugs commonly used. Most common is azothiamidine. So these are the drugs being used to just increase the lifespan of this HIV patient. Now let's come to the next point, that is prevention. Well, always prevention is better than cure in such deadly cases. अब prevent कैसे करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ होना चाहिए, डिस्पोजेबल नीडल्स यूज होने चाहिए, मतलब एक बार किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया या फिर इंजेक्शन यूज किया तो उस नीडल्स को थ्रो ऑफ करना चाहिए, उसको रीयूज नहीं करना चाहिए। प्लस देयर शुड बी फ्री सप्लाई ऑफ कंडोम्स एज वेल एज सेक्स एजुकेशन इन द चिल्ड्रंस और एट द टीनेज शुड बी गिवन इन द सोसाइटी, सो इट will definitely reduce the chances of future infection. So we must follow this guideline for prevention. अब इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है? जनरली हमारे यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो नाको, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यू दिल्ली में है। उसके डायरेक्टर जनरल का नाम है संजीवा कुमार। उसी के साथ कई सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्क कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है नेपट्यून फाउंडेशन और डिजायर सोसाइटी। अब लास्ट पॉइंट इस टॉपिक को समझने के लिए है कि सोसाइटी का भी कुछ रोल होता है इस डिसीज का, जो एक स्टिग्मा लग जाता है इंसान पे, उसको डील करने के लिए। जैसे कि मिसकंसेप्शन तो क्लियर है कि यहाँ पे ये किसी को टच करने से या टाइम स्पेंड करने से या लंच डिनर से स्प्रेड नहीं होता है। तो सोसाइटी को उस एड्स पेशेंट के टूवर्ड्स सिंपैथी रखनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम कौन एड्स पेशेंट है उसका डिस्क्लोजर भी होना चाहिए, एज वेल एज सोसाइटी को मेडिकल फैटर्निटी के साथ कोऑपरेशन रखना चाहिए ताकि डिसीज का स्प्रेड ना हो। सो आई होप विद इन शॉर्ट इन दिस 10 पॉइंट यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।